नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CIET NCERT के लाइव फोन इन इंटरैक्टिव कार्यक्रम में। मैं हूं तन्वी खुराना। 7वीं कक्षा के सभी छात्र हमारे साथ इस विज्ञान के कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और हमसे बातचीत कर सकते हैं। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं आज के इस विषय से जुड़े हुए, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर है 8800440559। अगर ईमेल करना चाहें तो ईमेल आईडी होगा dth.class7@ciet.nic.in। इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो कि है NCERT ऑफिशियल। उसके लाइव चैट बॉक्स में भी आप अपने सवाल लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ एक मेहमान मौजूद है जिन्हें बेहद खुशी होगी आपके सभी सवालों का जवाब देकर। तो आइए आपका परिचय करवाना चाहेंगे हमारे मेहमान मिस्टर सुशील कुमार जी से। स्वागत है सर आपका। Thank you, ma'am. Good afternoon to you as well as all the listeners and viewers. गुड आफ्टरनून टू यू टू सर। सर हैं PGT इन बायोलॉजी, केंद्रीय विद्यालय अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। और मेरे पास हैं बहुत सारे सवाल आज के इस विषय से जुड़े हुए जो मैं सर से पूछना चाहती हूँ। अगर आप भी पूछना चाहते हैं तो 2:30 बजे तक हम यहाँ मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम चलता रहेगा, बातचीत चलती रहेगी, तो आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। इससे पहले कि हम इस बातचीत को शुरू करें, हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे जो कि है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी से जुड़ी हुई। वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया assumed G20 presidency and would convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country this year, that is 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history, as it seeks to play an important role by finding global pragmatic solutions for the well-being of all, and in doing so manifest its true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or should I say, the world is one family. Vasudhaiva Kutumbakam also translates to one earth, one family, one future. And that is exactly the theme of this year's India's G20 presidency. तो चलिए इस बातचीत को शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स हमारे आज के विषय पर। सर से पूछना चाहेंगे, सर इस पाठ के अंदर, इस विषय के अंदर आज हम क्या सीखने, क्या समझने वाले हैं सर? Yes, ma'am. Thank you very much. So today we will discuss about the respiration and as well as how respiration takes place. And what is the mechanism of respiration, or what are the different type of the respiration? So in the meantime, I would like to start my session. So my students, you all know that my body, your body, as well as every living organism body is made up of many small basic units, and these units we people are known as cell. So every living organism is made up of cells. We can compare the cells like any building is made by the bricks. So many bricks form the building. So in this manner, our body as well as other living organism body is made up of the cell. And these cells have different functions to perform in these organisms, such as one of the functions is known as digestion. Another process is known as respiration, one is known as transportation, and excretion, reproduction, etc. So we people have discussed in detail about other process, but today in this session we will discuss about the respiration. So the cells can perform these functions only if they get the energy to do so. Any function will be performed by the cell when the cell gets the energy. So now the question arises, how energy is obtained by the cell? So today we will discuss the process that is known as respiration, and how respiration is helpful in providing the energy to the living organism. So hence all living organisms need food which give them the required energy. We people require the food as well as plants require the food. So the energy present in the food get released when the organism respire or breathe. So we all are knowing about in the chemistry that every substance or every compound is made by the so many bonds. So when we take the food
and our food consists of carbohydrate, protein, fat. So these are the macromolecules, and these molecules are formed by the various bonds. So when these bonds are broken down, and the energy is liberated, and that energy is stored in our body in the form of ATP, or we can say that we people use that energy. So this is the introduction of this topic. So let us start one by one, and I would like to share you the PowerPoint presentation that I have prepared for you. So now it is clear that all living organisms respire, as well as respiration is one of the essential activity or essential process of the living organism. So respiration is helpful in releasing the energy from the food that we people eat. The oxygen we inhale, we people inhale the oxygen, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं. It's used to break down the glucose into the carbon dioxide and water. So energy is released in the process, and that energy is stored in our body. So respiration is a process which involves breathing. So now it is clear that the respiration involves the breathing. So let us discuss more about the respiration. So respiration is the process by which the food is broken down in the cells of the body. So the food that we people suppose that is the glucose. So glucose, when get in contact with oxygen, so our body is made up of the millions of the cells. Similarly, other multicellular organism, plant body is made up of so many of the cells. So in the each cell, there is the process that takes place, like the glucose in presence of oxygen get converted into the, or get broken down into the carbon dioxide and water, and energy is released, and energy is used by the living organism. So this is known as aerobic respiration, or we can say it is cellular respiration. Why it is known as cellular respiration? Because the respiration takes place inside the cell. So cellular respiration, it is the process of breakdown of the food in the cell with the release of energy, and this energy is used by the people or any living organism. So let us discuss about there are the two types of the respiration. So these two types of the respiration basically can be on the basis of the whether the organism, the food is broken down in presence of oxygen, or food is broken down in absence of oxygen. So on the basis of the oxygen, whether the food is broken down in presence of oxygen or absence of oxygen, respiration is of two types. So one is known as aerobic respiration, another known as anaerobic respiration. So my students focus on the word aerobic. So if the aerobic word is concerned, so aerobic means something that is related with the air or oxygen. So aerobic respiration is the respiration in which glucose is broken down in the presence of oxygen to release the carbon dioxide, water, and energy. It takes place in most of the organisms. So we can say that in my body, in your body, as well as other living organisms or plants, this type of respiration takes place. So glucose in presence of oxygen, it is broken down into the carbon dioxide plus water plus energy, and this cellular respiration usually takes place in the various cellular organisms, various cellular organelle, like one of the cell organelle is known as mitochondria. So the second one is the anaerobic respiration. So anaerobic respiration is concerned, so this is the respiration in which glucose is broken down in the absence of oxygen to release the some amount of the carbon dioxide, and the food or glucose get converted into the alcohol, and some amount of the energy is also liberated. So this is the anaerobic respiration. As the energy liberated is concerned, so in case of aerobic respiration, the energy is released
is much more than the energy released in anaerobic respiration. There is one organism that is known as yeast. It is a unicellular fungus. Means the body of the yeast is made up of single cell. So yeast are the single celled organism, and yeast respire anaerobically, and during this process yeast convert the glucose into the alcohol. That is why the yeast popularly known as, हम और आप अपनी भाषा में जिसे खमीर कहते हैं, इसका बहुत उपयोग होता है अलग अलग प्रोसेस में, विशेषकर ब्रेवरीज एंड बेकरीज में बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पर ब्रेवरीज में कुछ पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, विशेषकर एल्कोहल को बनाने में उपयोग होता है, और बेकरीज में हम लोग अलग अलग प्रकार के जो भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट बनाते हैं उनमें ईस्ट का बहुत उपयोग होता है. सो ईस्ट आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक wine and beer as well as in the bread industry, that is the bakeries. And yeast is a fungus, or you all are well aware that fungus are the one type of the plant group that does not have the chlorophyll, that is the green pigment, and they grow on the dead and decaying substance. So this is the beauty of the fungus. So yeast is one of the fungus. So let us discuss in detail some more aspect of the respiration. So as the anaerobic respiration is concerned, so anaerobic respiration usually it is seen in sometime when we people do the vigorous exercise, or my student, you have seen that in the cricket match or in the football match or in the running, so you have seen that the sometimes the muscular fatigue takes place. So when the athlete or when a player do the vigorous exercise, और बहुत देर से आपने देखा होगा किसी क्रिकेट मैच में कोई डबल सेंचुरी या सिंगल सेंचुरी बनाने के बाद देखा होगा कि अक्सर उनके पैरों में फिर इसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं और कुछ उनकी गर्म पानी से सिकाई करते हैं, या कुछ देर के लिए खेल रुक जाता है. तो ये आपने देखा होगा कि ये सब होता है क्योंकि जब कोई व्यक्ति ज्यादा विगरस एक्सरसाइज कर देता तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है. क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब कोई हम लोग काम करते तो हमें चाहिए एनर्जी. तो जब हम लोग ज्यादा तेजी से काम करेंगे, ज्यादा तेज एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ज्यादा विगरस एक्सरसाइज करेंगे, तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए. मतलब ज्यादा एनर्जी कैसे मिलेगी? ज्यादा भोजन हमारे सेल्स में उसे कंबशन होना पड़ेगा, और उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए. तो अब ऑक्सीजन की एक बार डिमांड बढ़ जाती है बॉडी में, तो हम लोग जल्दी जल्दी देखा होगा जब हम लोग दौड़ रहे होते हैं, साइकिलिंग कर रहे होते हैं लॉन्ग वे में, तब हमने देखा होगा, आपने देखा होगा कि हमारी सांसें जल्दी जल्दी चलती हैं. क्यों? क्योंकि हमको जल्दी ऑक्सीजन चाहिए. लेकिन उसी दौरान हमारे शरीर में ऑक्सीजन की डेप्थ हो जाती, क्योंकि उतनी ऑक्सीजन हम जल्दी जल्दी से एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाते. तो हमारे शरीर में जो भोजन है वो है एनारोबिकली ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है. मतलब होना चाहिए उसको एरोबिकली, तो एरोबिकली हो रहा था, जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी में. लेकिन ऑक्सीजन की जब डेप्थ हो गई, ऑक्सीजन की कमी हुई, तो उस दौरान हमारा जो भी बॉडी में जो सेल्स हैं उनमें जो वो एनारोबिकली रिस्पायर करना शुरू कर देंगे, और ग्लूकोज अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में तब्दील होगा. अब ये लैक्टिक एसिड जो मेरे आपके देखा होगा पैरों में, मसल्स में, या जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो जमा हो जाता है, इसे सार्कोलैक्टिक एसिड कहते हैं. तो आपने देखा होगा बच्चों की इसके आपने जब कई बार ये भी देखा गया है कि एनारोबिक रिस्पायरेशन में जब लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो मस्कुलर क्रैम्प डेवलप हो जाते हैं, और मस्कुलर क्रैम्प जो हो जाते हैं ये एनारोबिक रिस्पायरेशन की वजह से होती है. आपने जो स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार के दृश्य आपने अलग अलग गेम में देखे होंगे. आपकी स्कूल डेज में भी जब आप स्कूल के गेम में भाग लेते हैं, या स्कूल का वार्षिकोत्सव होता है, स्पोर्ट इवेंट होती है, तब आप ये सारे पिक्चर देखते होंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट की आपको कई बार जरूरत पड़ती है. तो अब आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन
दोनों हैंड टू हैंड मिलके चलती है, लेकिन यूजुअली एरोबिक रिस्पायरेशन चलता है। लेकिन हम जब हमारे शरीर में किसी कारणवश ऑक्सीजन की डेप्थ हो जाती, कमी हो जाए और डिमांड ज्यादा हो, तो उस दौरान फिर एनारोबिकली हमारी सेल्स रिस्पायर शुरू कर देती है। ये आप देख रहे हैं एक ढंग है जिसमें मस्कुलर क्रैम्प का रिलीफ किया जाता है, और इसमें हॉट वाटर, हॉट बाथ, गुनगुना पानी, ल्यूकवार्म वाटर से मसाज की जाती है, और उसमें जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है, और इस वजह से सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन मसल तक प्रॉपर वे में होने लगती है। तो तानवी मैम, आपने और हमने जब भी बचपन में किसी भी गेम में भाग लिया हो, या साइकिलिंग की हो, या जब हम लोग लंबे या पहाड़ पर चढ़ते हैं कभी, या लंबे दूरी तक हम लोग पैदल चलते हैं, तो आपने देखा होगा हमारे आप पैर रुकने लगते हैं जी। तो जब हम और आप लोग कुछ देर बैठते हैं और उसकी मसाज करते हैं, या फिर गर्म पानी से बाथ लेते हैं, या फिर उससे सिकाई करते हैं, तो ये मस्कुलर क्रैम्प में हमें रिलीफ मिल जाता है। तो ये जो पूरा कुछ ये रिस्पायरेशन से जुड़ी हुई घटना है। मेरे बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये सब होता है तब जब हमें डिमांड ज्यादा होती है एनर्जी की, और एनर्जी के लिए फिर हमें उतनी ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि कंबशन ऑफ फूड से हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी, और जब ऑक्सीजन हमें उतनी नहीं मिल पाएगी तो फिर एनर्जी रिस्पायरेशन होता है। चलिए, अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये ब्रीदिंग एक टर्म होता है, वो क्या होता है, और इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ब्रीदिंग इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इन, मतलब in the atmosphere you are well aware that about 20% of the oxygen is found. So there are mixture of the gases. So in the breathing, pupil usually takes the air that is rich in the oxygen, and oxygen goes in the body inside the cell, and combustion of the food takes place in the so many cells that we have already discussed with you, and the food is get combusted as well as broken down, and energy as well as carbon dioxide is released, as well as water is released. So the carbon dioxide that is released in the cells, that is the cell that reaches in the lungs, and there are, from the lungs there is a definite system. So the carbon dioxide which air is giving out with the help of respiratory organ. So in the breathing, breathing is a complete process in which oxygen rich air is taken out and carbon dioxide rich air is given out with the help of respiratory organ. So taken in of air rich oxygen is called inhalation. देखिए, मैं आपके सामने inhalation कह रहा हूं। देखिए, तो हम लोग ऑक्सीजन रिच हवा को जब अंदर लेते हैं, सो दैट इज नोन एज इनहेलेशन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, स्लाइड में भी देख पा रहे होंगे, ऑक्सीजन रिच एयर जब हम लोग अपने नाक के रास्ते लेते हैं, नॉस्ट्रिल से लेते हैं, तो हमारे विंड पाइप से होके फिर हमारे फेफड़ों में पहुंच जाता है, और फेफड़ों से तमाम कैपिलरीज जुड़ी रहती हैं, और उन कैपिलरीज से फिर ब्लड वेसल से होता हुआ अलग अलग सेल्स तक पहुंच जाता है। The giving out of the air rich in carbon dioxide is called exhalation. So you will be able to see in the process of exhalation, the pupil usually exhale the carbon dioxide. So in inhalation as well as in exhalation, the respiratory organs help, and inhalation and exhalation combinedly constitute the breathing. So breathing is the inhalation as well as exhalation. My students, you have seen that in some cases the person breathing rate is slow, or in some cases the breathing rate of the person is fast, as well as you have seen that in newly born baby, or the baby that is the 1 or 2 year old. So you have seen that the breathing rate or respiration rate is quite higher in comparison to the V pupil. So the number of the times a person breathes in a minute, it is called the breathing rate. So number of the breath per minute.
we can say the breathing rate. So when a person need more energy, so he breathes faster, more oxygen is supplied to the cell, more food is broken down, and more energy is released. So when you do the brisk walking or you are doing the exercise, you are doing the cycling, you are doing the running, so the breathing rate get faster. And when you are sleeping, so in this condition, in the sleeping condition, the breathing rate is quite slower. So in this way, you will be able to understand the breathing rate change according to the activity. So when you are doing the activity, in the activity you need more energy, so breathing rate get faster. And there is an instrument that is known as spirometer. So there is an instrument that is known as spirometer. So with the help of the spirometer, you can calculate your breathing rate. You can monitor your breathing rate. So now, Okay, sir, I have a question here. Yes, ma'am. Sir, so we breathe from our nostrils as well and from our mouth as well. So, what is the suggestion? Although it's we breathe from both the places, but which is the most appropriate one? Some say that we should breathe from our nose and we should not breathe from our mouth. So, would you like to shed some light on this? That is there any proper appropriate way in which we should breathe? Yes, ma'am. So it is a very nice question, ma'am, because so many people do the wrong practice. So जब मैम हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स बनाए गए हैं और अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए, जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द टू नॉस्ट्रिल एंड इनसाइड नॉस्ट्रिल ओपन इन द नेजल कैविटी. सो हियर इज द नेजल कैविटी एंड नेजल कैविटी आगे जाके मिलती है, एक कॉमन पाथवे होता है जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं. और फेरिंग्स के बाद फिर ये जो आगे खुलता है एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर, जैसा कि आप शायद स्लाइड में ही देख पा रहे होंगे, जिसको हम कहते हैं विंड पाइप. सो ये जो ब्रीदिंग की सिचुएशन में अगर हम देखें तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में है उसमें हमें यूजुअली नोज से एयर लेनी चाहिए और नोज से ही बाहर निकालनी चाहिए. सो दिस इज द राइट प्रैक्टिस. और इसके पीछे भी साइंस इन्वॉल्व है, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि हमारे नोज में देयर आर फाइन हेयर. आपने कभी देखे हो बच्चों तो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं. देयर आर सो मेनी फाइन हेयर्स आर फाउंड inside the nostril in the nasal cavity, and nasal cavity is lined by a chip substance or sticky substance that is known as mucus. So mucus lining is found in the nostril. So the purpose behind the nostril hair and as well as the mucus when the air goes inside our nostril. So if any microbes or harmful microbes or any microbes may be able to enter in our nostrils, so the hairs that are found that that did not allow to enter that organism inside the nostril, as well as चूंकि म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो अगर डस्ट पार्टिकल या कुछ भी इस प्रकार के पॉलन ग्रेन्स या हार्मफुल सब्सटेंस अगर शरीर के अंदर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर चिपचिपे सब्सटेंस हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के रूप में, म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, तो उसमें जाके वो इंट्रैप हो जाती हैं, तो हमारे शरीर में फिर अंदर जाके ये परेशानी का सबब नहीं बन पाती है. दूसरा चीज, अगर बाहर का तापमान ज्यादा है, गर्म हवा है और वो गर्म हवा एकदम अंदर पहुंची तो हमारे शरीर में पहुंचेगी तो हो सकता है कुछ परेशानी. तो हमारे शरीर में जैसे ही नॉस्ट्रिल में अंदर पहुंचती है तो ये एयर कंडीशनिंग का काम करता है. तो ये राइट प्रैक्टिस है कि हमें नाक से ही सांस लेनी चाहिए. कई लोग गलती से एक प्रैक्टिस बैड प्रैक्टिस डेवलप कर लेते माउथ से सांस लेना. सो माउथ में देयर आर नो हेयर्स आर फाउंड, सो इट इज नॉट गुड फॉर डूइंग द ब्रीदिंग इन with the help of the mouth. So now
सर बहुत Yes, बहुत ही ma'am. छोटी सी बात है, पर मुझे लगता है बच्चों को ये बात समझनी चाहिए और याद भी रखनी चाहिए कि हम भूल जाते हैं कि नोज़ इज़ द अप्रोप्रिएट वे जहाँ से हमें ब्रीथ करना चाहिए और मुंह से नहीं करना चाहिए। सर हमारे पास और समय नहीं है। हमने आज रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिजम्स का चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है, शायद आप इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर सकते हैं पार्ट 2 करके। और Yes, अभी के लिए हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। सर आपका बेहद धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो भी क्लैरिफिकेशंस थी ब्रीदिंग से रिलेटेड वो आपने हमारी दूर की, उसके लिए भी बेहद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल द चिल्ड्रन एज वेल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। हम उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। किसी भी कारणवश अगर आपने इसे नहीं देखा है तो फिर से देख सकते हैं एनसीईआरटी ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पर। थोड़ी देर में हाजिर होंगे एक और कार्यक्रम लेकर अपना, और 7वीं कक्षा के सभी बच्चों के लिए मैथ्स का ये कार्यक्रम होगा। थोड़ी देर में आएगा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री भाग 5 डिस्कशन होगा। तो आप अपने सवाल तैयार रखिए अगर आपके पास कोई भी सवाल है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से जुड़े हुए। और इसी तरह जाने से पहले एक और सूचना आपको देना चाहेंगे एनसीईआरटी की किताबों के बारे में जो अब पूरे भारत में उपलब्ध हैं। आप चाहें तो उन्हें डायरेक्टली सेल्स काउंटर से खरीद सकते हैं। सुबह 9:30 बजे से 6 बजे तक ये काउंटर्स मौजूद हैं नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी में। और अगर आप इन्हीं किताबों का पीडीएफ वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं एनसीईआरटी दीक्षा या ई पाठशाला की वेबसाइट या उनके मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। अगर आप इन किताबों का ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं वेबसाइट के माध्यम से तो ncrtbooks.ncrt.gov.in है हमारा वेबसाइट, और उसके माध्यम से आप बुक्स का ऑर्डर प्लेस कीजिए। आपके घर पर किताबें पहुंच जाएंगी, आपको कोई डिलीवरी चार्ज भी नहीं देना है। अगर हमारे ऑथोराइज्ड वेंडर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ncrt.nic.in है हमारी वेबसाइट, और इसी जानकारी को और जानना चाहते हैं, दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो टिक्कर के फॉर्म में इस वक्त ये आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध भी है। इजाजत चाहूंगी, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।